Hey genius, welcome back to the lecture 4 of periodic table and periodic trends. So this is the part A, lecture 4. So in the previous lecture, we have discussed about discovery of noble gases, discovery of atomic number, the modern long form periodic table, advantages as well as defects in the long form of periodic table, Bohr's classification based on electronic configuration, and the Actinide hypothesis. So all these things we have covered in the lecture 3. If you have not seen that video, please go and check that video. And in this current video, we are going to discuss about the mnemonics for S block and P block elements. So this lecture 4 is divided into 3 parts, 3 videos. So in part A, we will discuss in this video S block and P block elements, mnemonics. In part B, we will discuss about the mnemonics for D block elements along period. And in part C, we will discuss mnemonics for D block elements along group and mnemonics for F block elements. So all these mnemonics, I will say one for Hindi, one for English, both in both language. So whichever you are comfortable with, you can remember that one. And some of the mnemonics are prepared by some other uh, teachers or researchers. I have included those also, as well as some of the mnemonics are made by me. So all these I will show. Then you decide which one is easier for you to remember. And one more thing, to make these mnemonics, I will take help of some arbitrary stories. So you have to believe in those stories. So these stories may be irrelevant or wrong or not even true. So still you have to believe that these stories are true so that you can easily remember those mnemonics. Fine. So without wasting any time, let's start. So this is the modern periodic table, which is consisted of 118 elements. I have already discussed about this periodic table in earlier videos. You can check that. And in a brief, I will say that these sevens are the periods. So these rows are the periods. There are 7 rows in the periodic table. So that's why these 7 rows are called 7 periods. And these columns, if you see these columns, so these columns are called groups. So in total, there are 18 columns. Now, if you see this column 1 and column 2, or in other words, group 1 and group 2, these are called S block elements. And now come to this side, in the right hand side, you can see from group 13 to group 18. So these groups are called P block elements. And in between, we have from group 3 to group 12, these are called D block elements. And as a part of this, here we have this 14 lanthanides and 14 actinides. So these are called F block elements because the last electron will go to the n-2 f orbital. Now we are going to learn about the mnemonics of S block elements. So these many elements we will cover. So before that, let's see the periodic table, or what are the informations hidden inside the periodic table. So this is the periodic table that I have with me. So you can see different color codings, and if you just take one element, for example, if you take this chromium, you can see lot of numbers are written in the left side as well as right side. So what is the meaning of those numbers? So just try to understand this. So I have this periodic table. You might have some different version. Maybe more informations are there or different informations are there. But what are the informations given that will be mentioned in the periodic table? So if you see in this lower corner, it has been mentioned that what are the informations given in this periodic table along with the elements. Now let's see. So if you see this one is given for the aluminium, and for aluminium we have symbol. Along with that, if you take this corner, in the corner you can see
atomic number. Then the lower one is the density in gram per ml. Next one is the atomic radius. Then this one is given as the melting point temperature and boiling point temperature in degree centigrade. And at the end, it is given the electronic structure. So this neon means neon has atomic number of 10, and the closest inert gas element to this aluminum is the neon, or the previous, I should not say closest, I should say the previous uh, inert gas element is the neon. So neon has 10 elements, 10 electrons. So that's why all those 10 electrons you can put in the short form as a neon and then bracket. So it counts 10 electrons. Then it has 3s2, 2 electrons in the s orbital, and 3p1, so 1 electron in the p orbital. So in total, it has 13 electrons. So that is the electronic structure. Now come to the right hand side. See, in the right hand side, atomic weight is given. So atomic weight is the summation of proton and neutron, which is in the nucleus. Now this one is the electronegativity. Next one is the first ionization energy, and this is the most favorable oxidation state. And here also it was given year of discovery, in which year this element was discovered, and name already you know the full name. And this one is the crystal structure. So what kind of crystal it forms? So some more informations are given here, that solids are shown in black, gases are shown in red, liquids are shown in blue color, synthetic elements are shown in orange, and this inside the element bracket and double star, that indicates most stable isotope, and radioactive elements are marked by this symbol, this yellow black symbol. So all these informations are hidden inside this periodic table, which one I have. So if you go and check your periodic table, you can also find a lot of informations are hidden inside this periodic table, and it has been given for each and every element. So now we will start the mnemonics for S block element. So we will start with discussing the S block element and group 1 element. So in group 1, we have hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So कैसे याद रखेंगे इसको? इसको ये याद रखेंगे कि दो लड़की हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, हलीना एंड रूबी. तो वो दोनों बहुत बचपन से दोस्त हैं और बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो बाकी लोग उनको देख के जेलस होते हैं. तो क्या होता है, क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि अरे वो देखो, दोनों साथ में जा रहे हैं, या फिर दोनों साथ में खा रहे हैं, हर एक चीज साथ में कर रहे हैं. तो क्या होता है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप. तो लोगों के जलने का वजह क्या है कि हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप. तो हलीना में आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, एक साथ में हलीना. की में आ रहा है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल के है. रूबी से आपको पता चल रहा है कि रूबिडियम है इस पोजीशन में, और ये से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीजियम से. और फ्रेंडशिप का पहले है एफ आर, जो कि फ्रांसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये याद रखना है कि हलीना और रूबी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लोग उनसे जलते हैं, और लोगों के जलने की वजह क्या है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप. या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि हलीना एक बहुत रिलीजियस लड़की है, वो बहुत मानती है, गॉड में बिलीव करती है. तो हलीना की रब से फरियाद, क्या हुआ, हलीना का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसने रब से जाके बात किया, मन्नत मांगी. तो रिलीजियस, एज अ रिलीजियस पर्सन गॉड से बात कर रही है वो. तो क्या है, तो हलीना की रब से फरियाद. तो हलीना में कवर हो रहा है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम. की से आ रहा है पोटेशियम, रब से आरबी रुबिडियम, और से आ रहा है सीजियम, और फरियाद एफ आर, तो एफ आर से फ्रांसियम.
Okay, now let's move to the English one. So अभी क्या बोला था हमने? Helena and Ruby are very close friends. So one friend's name is Helena, the other friend's name is Ruby. So they are very close friends. What happened? Ruby was missing for some time. There was a party going on in the house and Ruby was missing. So what Helena did? Helena kept his portion of chicken so that she can come back and eat, because they are very close friends, right? So that's why you can remember that Helena kept Ruby's crispy fried chicken. Ruby was missing, she was not coming, Ruby was coming late, so Helena kept her portion of chicken. So that's why you can remember Helena kept Ruby's crispy fried chicken. Now Helena, this one covers hydrogen, lithium and sodium. And from kept is starting with potassium, K sign. So this K represents potassium. Rubies. So rubies, from ruby, you can remember rubidium. Crispy. So from this crispy, CS, you have to remember CS is the symbol of cesium. Crispy fried chicken. So fried, FR. FR represents francium. So Helena kept Ruby's crispy fried chicken. To remember this group 1 elements. Next we will move towards group 2. Yeah, so this will be group 2. Sorry, just ignore this. This will be group 2. And group 2 element in Hindi. First let's see कि क्या क्या एलिमेंट है ग्रुप 2 में. ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा नेमोनिक्स है जो कि बहुत ही लोग फॉलो करते हैं इसको. बेटा मांगे कार्ड, सारे बाप राजी. तो अगर घर में इकलौता लड़का है कोई, तो लड़का बहुत प्यार का होता है, लाड प्यार का होता है, मम्मी पापा का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, वो जो भी मांगता है मम्मी पापा उसको ला के देते हैं. तो दैट्स वाई अभी बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, एज हो गया थोड़ा, उसका गर्लफ्रेंड पटाने का मन किया होगा, तो वो क्या, उसको चाहिए कार. तो वो घर पे मांगा कि पापा मुझे कार चाहिए. तो अगर इकलौता बेटा है, अब इकलौता बेटा अगर कार मांग रहा है तो पापा तो देंगे ही, है ना. तो दैट्स वाई बेटा मांगे कार, सारे बाप राजी. नाउ लेट्स सी. बेटा बीई से स्टार्ट हो रहा है, तो बीई से हमारा क्या आता है, बेरिलियम. मांगे, मांगे में है एमजी, जो एमजी से होता है मैग्नीशियम. कार, कार सी कैल्शियम. सारे, सारे में है एस आर, तो एस आर से हो रहा है स्ट्रोंशियम. बाप, बाप में बी ए आ रहा है. और बेटा में ये याद रखना कि बेटा में बीई ये था, बीई से बेरिलियम हो रहा था, और बाप में बी ए आता है, तो बी ए से होगा बेरियम. राजी, राजी से रेडियम. बेटा मांगे कार, सारे बाप राजी. तो ये है इसको ग्रुप 2 को याद रखने के लिए नेमोनिक्स. नाउ लेट्स सी इट इन इंग्लिश. So in English, you can see this will be group 2. Okay, don't I'm just apologies for this mistake. It will be group 2. So now group 2 elements: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Now how to remember? So there was a match between women team and uh, men team. So there was a funny match or charity match between American women team and American uh, men team. But what happened? Suddenly, American women team performed very well and they won the game. They won the game in 2-0. So what happened? Because the American players, they were very good at back pass. So they were passing from the longer radius, from the longer range. They were doing the back passes. So their back passes, forward passes, all those passes were very accurate. So that's why the men team lost the match. Now, what is the reason why the men team lost the match? Because Morgan या फिर मेगन, आप दोनों का ही नाम ले सकते हो, तो both are very famous soccer players. So this is Megan and this one is Morgan. Morgan seems like an actress, but she is a very talented American soccer player. So you can remember by any one of name, any one of their name. So because, so क्या the reason
why the main team lost? Because Morgan or Megan, whichever you like, can strike or back pass from bigger radius. So they were striking from far away as well as they were giving good back passes. So because Morgan or Megan can strike or back pass from bigger radius. So that's why the main team lost the match. Now next we will look into the p block elements. So we'll start with this group 13. तो ग्रुप 13 में क्या क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. तो इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा है कि बैगन, आलू, गाजर का इतना बड़ा थैला. तो आप शॉपिंग करने गए हो तो आपको पूरे हफ्ते का खाना लेके आना होगा. आपकी मम्मी ने बोला कि पूरे हफ्ते का खाना लेके आओ, जाओ आलू बैगन गाजर जो भी मिलेगा लेके आओगे. तो एक बड़ा सा थैला दिया है आपको लेके आने के लिए. दैट्स वाई बैगन, आलू, गाजर का इतना बड़ा थैला. तो इतना बड़ा थैला लेके आप गए हो शॉपिंग करने. और अगर आपको और भी छोटे से वर्ड याद रखना है तो छोटे से वर्ड के लिए आप याद रख सकते हो बैगिट. सो बैगिट एक पर्स का कंपनी है, मतलब वो बनाते हैं. तो बैगिट आप याद रख सकते हो, जो कि मेंस और विमेंस बैग बनाते हैं. बैगिट से क्या होता है? तो बैगिट बी से आ रहा है बोरोन, फिर ए से आ रहा है एल्यूमिनियम, फिर जी से आ रहा है गैलियम, आई से आ रहा है इंडियम और टी से आ रहा है थैलियम. बैगिट. सिमिलरली अगर इधर देखोगे बैगन, आलू, गाजर का इतना बड़ा थैला, तो बी से यहाँ पे बी से आएगा बोरोन, आलू में एल है तो एल से एल्यूमिनियम, गाजर का जीए से गैलियम, और इतना में आई और एन है, इतना में तो इंडियम, और थैला में टीएल, तो टीएल से थैलियम. तो बैगन, आलू, गाजर का इतना बड़ा थैला. और सिंपल सा अगर याद रखना है तो बैगिट, बैगिट याद रख सकते हो. Now let's see the English version. So the English version for group 13 elements, you have to remember that so this Galapagos, so Galapagos was found in Thailand. Now what you found? That suddenly a big Galapagos was found in Thailand, and people were thinking that these Galapagos are almost extinct or it is about to be finished. So suddenly some people found big alive Galapagos in Thailand. Big alive Galapagos in Thailand. So B, from B you have to remember boron. Alive, alive gives Al, that is for aluminum. Galapagos, Ga, that is for gallium. In, indium. And in Thailand Tl are there, so from the Tl you have to remember thallium. Big alive Galapagos in thallium. Or what happened? So suddenly this Avengers opened a mysterious portal, and from portal, so lot of aliens started coming inside the earth. So they are coming from different planets, different places, or even from multiverse they are coming. So they might be coming from anywhere else, and they started coming in Thailand. So during this Avengers wars, these aliens are coming. And where they are gathering? They are gathering in Thailand. So black aliens gathered in Thailand. क्या हो रहा था? Because this Avengers war was going on, and that's why these black aliens gathered in Thailand. From black we'll get B for boron. Aliens, Al, aluminum, gathered Ga, gallium, in indium, Thailand. From Thailand you have to remember Tl stands for thallium. So black aliens gathered in Thailand. Next we will see group 14 elements. तो अभी हम देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स. सो ग्रुप 14 एलिमेंट्स में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड. तो ये एलिमेंट्स हमें याद रखना है ग्रुप 14 के लिए. तो अभी क्या हुआ, शिमला में स्नो पड़ रहे हैं. तो स्नो देखने के लिए आपके पड़ोस वाली चाची शिमला चली गई है. उनका बहुत दिन का मन था कि वो शिमला जाएंगे, स्नो से खेलेंगे. तो अभी एक उनके रिश्तेदार आए हैं कोई, तो वो आके आपसे पूछ रहे हैं कि ये लोग कहाँ गए हैं. तो आप बोल रहे हो
कि चाची शिमला गई स्नो पे। जो आपके नेबरिंग चाची थी वो शिमला में चली गई, आप उनको बता रहे हो कि चाची शिमला गई स्नो पे, क्योंकि स्नो पसंद है चाची को इसलिए शिमला चली गई वो। तो चाची में सी आएगा, तो सी फॉर कार्बन। शिमला में एसआई आएगा, तो एसआई से होगा सिलिकन। गई से आपको याद रखना होगा कि गई जर्मेनियम। और स्नो, स्नो का स्टार्ट होता है एसएन से, तो एसएन मतलब होता है टीन। और फिर स्नो पे, पे से आपको याद रखना होगा कि ये पी से स्टार्ट होता है, तो पीबी लेड होगा इसमें। और अगर आपको ये याद रखना टफ लगता है तो यू कैन रिमेम्बर दिस वन। तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि शिव जी और पार्वती जी कितना क्लोज थे, वो उनका रिलेशन हमें पता है, हम जानते हैं उनको साथ में। तो अब बोल सकते हो कि चले शिव जी संग पार्वती, तो दोनों साथ में जा रहे हैं कहीं पे। तो चले शिव जी संग पार्वती, तो चले से होगा कार्बन। शिव, शिव में एस और आई आएगा, तो यहां से होगा सिलिकन। जी में जर्मेनियम। संग, संग में एस और एन आएगा, तो एस एन से टीन। और पार्वती, पार्वती के अंदर है पी एंड बी, तो यहाँ पे आएगा लेड। चले शिव जी संग पार्वती। Now let's see this group 14 elements in English. So in group 14 we have carbon, silicon, germanium, tin and lead. So you are attending a chemistry lecture. Right now you are also attending chemistry lecture. But in your tuition, when you attend the chemistry lectures, so your teacher gives a very hard problems, very standard problems. So that's why you are not able to solve those things. Now when you are not able to solve, then your parents asked that why you cannot solve these things, what is happening. Then you said ki, father or mother, see, or the teacher is giving very hard problems, or the teacher is giving very standard problems. So that's why when they were asking you why you are not able to solve these things, then you were telling to your parents that chemistry sir gave standard problems. So as chemistry sir gave standard problems, you could not solve these things. So from chemistry starts with C, so C for carbon. Sir, it starts with Si, Si for silicon. Gave, you have to remember this G and E. From this GE, germanium. Standard, from the standard you have to find out this S and N. So from this Sn you have to remember tin. And problems, problems P and B. So it represents lead. So chemistry sir gave standard problems. अभी हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में क्या क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। तो ये सारे हैं ग्रुप 15 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप एक फिल्म देख रहे थे, तो उस फिल्म में एक्शन मूवी है हिंदी का, तो हिंदी का एक्शन मूवी में हीरो कौन था? हीरो थे नाना पाटेकर, और उनको तो हम जानते ही हैं, उनके डायलॉग्स काफी फेमस है, एकदम सिग्मा मेल है वो। तो नाना पाटेकर थे हीरो, और ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या थी हीरोइन। तो अभी आपकी जो फिल्म आप देख रहे थे आपको बहुत पसंद आया, तो उस फिल्म में हीरो थे नाना पाटेकर और हीरोइन थी ऐश्वर्या। तो आप क्या बोलोगे? आपको फिल्म बहुत अच्छा लगा है, उनके एक्टिंग्स भी बहुत अच्छे लगे हैं, तो आप बोलोगे कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, बहुत अच्छा खासा एक्टिंग किया उन्होंने, आपको फिल्म एकदम पसंद आया है। दैट्स वाई नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। सो नाना से एन से आएगा नाइट्रोजन, पाटेकर के पी से आएगा फॉस्फोरस, ऐश्वर्या के ए एस, यहाँ से आपको रिमेंबर करना होगा आर्सेनिक, सब, सब में एस एंड बी, तो यहाँ से एंटीमोनी, एंड बिंदास, बिंदास में बी आई, तो बिस्मथ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। फाइन। Now let's see the English version. So in group 15 we have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Now this person, this scientist, you already know, this is Newton, Sir Isaac Newton. So what happened? So we all know that one apple fell down from a tree and it had hit his head. So that's how he started thinking that why it is always coming down, why the apple always comes down and doesn't go up. And slowly he invented gravity. Now what happened, that you have to remember that after that he thought let's take a bite of that apple.
and he took a bite of that apple. After taking bite of that apple, so Newton passed away. He died. Why? Because in that apple there was too much antimony. The bioaccumulation of antimony happened in that apple. So that's why when Newton took a bite of that apple, it causes damage, or it caused um, his death. So you have to remember, Newton passed away as antimony bioaccumulated. So inside this apple, antimony got bioaccumulated, and after taking a bite from this, Newton passed away. So Newton passed away as antimony bioaccumulated. So from Newton, you will find out nitrogen, N for nitrogen, passed away, P, P stands for phosphorus, as. So this is as, AS is coming first. So is for arsenic. And then antimony, it is already there, antimony. So after arsenic, antimony will come, bioaccumulated. So bioaccumulated starts from Bi. So from Bi, it is bismuth. So Newton passed away as antimony bioaccumulated. तो अभी हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 16 में. तो ग्रुप 16 में क्या क्या है हमारा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. तो इसको कैसे हम याद करेंगे कि ओह स्टाइल से तेल पॉलिश. तो बच्चे यहाँ पे ना देखें, ये बच्चों का कंटेंट नहीं है, ये बस केमिस्ट्री के लिए है, कुछ और मत सोचिए इसको. तो क्या हुआ, अभी आपका फ्रेंड बाहर गई है, तो बाहर एक कंट्री में जाके उनको पता चला कि वहाँ पे बहुत अच्छे से मसाज दिया जाता है. तो वो मसाज लेने के लिए क्या करते हैं? तेल यूज करते हैं. तो सोचो आपका फ्रेंड किसी कंट्री में गई है, सोचो जापान में गई है या कहीं पे गई है, एंड वहाँ पे जाके वो मसाज ले रही है. तो जो मसाज देगी पहले, मतलब देंगे जो मसाज, वो पहले उनको तेल पॉलिश करेंगे, फिर अच्छे से मसाज करेंगे. तो वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगा आपको देख के, तो फिर आप क्या बोलोगे? ओह स्टाइल से तेल पॉलिश, मतलब बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं काम. तो ओ से आपको याद रखना होगा ऑक्सीजन. स्टाइल के पहले आ रहा है एस से आपको याद रखना होगा सल्फर. से में आ रहा है एस ई फॉर सेलेनियम. तेल में आ रहा है टी फॉर टेलुरियम. और पॉलिश में पीओ फॉर पोलोनियम. वो स्टाइल से तेल पॉलिश. और अगर आप मार्वल फैंस हो मेरी तरह, देन यू कैन रिमेंबर ओह स्टाइल से टेलीपोर्टेशन. तो आप जानते हो डॉक्टर स्ट्रेंज, दिस इज डॉक्टर स्ट्रेंज, वो टेलीपोर्टेशन करने के लिए एक्सपर्ट थे. तो आप क्या बोल सकते हो कि ओह स्टाइल से टेलीपोर्टेशन. और अगर आप नहीं जानते हो, देन गो वॉच बोथ द पार्ट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, पार्ट 1 पार्ट 2. एंड अभी तो बहुत सारे सीक्वल्स में भी आ रहे हैं वो. तो ओ स्टाइल से टेलीपोर्टेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल के से सल्फर, से सेलेनियम, टेली में टीई से टेलुरियम, एंड पोर्टेशन के पीओ से पोलोनियम. So next we will move to English. So for group 16, p block elements oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. How to remember this? So you know this British actor Oliver Stark, the very famous actor. So what happened? So in the initial days before he got famous, he used to sell telephones. So this is not I'm telling, I have already told in the beginning of the lecture. So these stories are not true, but you have to believe that these are the true stories to remember these mnemonics. So Oliver Stark used to sell telephones before he got famous. So that's why you can remember that Oliver Stark sells telephone. So Oliver Stark sells telephone. So Oliver from Oliver you will get this O, which is for oxygen. Stark, in the Stark there is only single S. So from this S you have to remember sulfur. And cells, in this cells you have Se. So from Se you have to remember selenium. Telephone, from the telephone you have Te for tellurium. And in the phone you have P and O. So this PO stands for polonium.
So Oliver Stark sells telephone. Or you can remember like this. So this actor Oliver Stark, so he is sending tempting photos. What happened? You have gone for a meeting and Oliver Stark is your friend, and Oliver Stark, he is having a party in his home. He is having biryani or something, and he is sending you that, oh friend, see, you missed this, you would have come here so you could have eat this biryani. So he is sending you tempting photos of biryani and other things. So you have to remember Oliver Stark sends tempting photos, or Oliver Stark is sending tempting photos. So from Oliver, O stands for oxygen. In this Stark, S stands for sulfur. Sends, in this sends, there is Se. So this Se stands for selenium. Tempting starts with Te, that is for tellurium. And photos, this Po represents polonium. So Oliver Stark sends tempting photos. नेक्स्ट अभी हम आएंगे ग्रुप 17 में. तो पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 17, ये दिस इज ऑल्सो नोन एज हैलोजेंस. तो हैलोजेंस में क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. तो इसको कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखो कि कल आप चिकन बिरयानी खा रहे थे, और चिकन बिरयानी खाते खाते क्या हुआ कि चिकन का एक बोन जाके गले में अटक गया. तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो आपको अभी बिरयानी खाने से थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि फिर से चिकन ना अटक जाए. तो आपके फ्रेंड्स फिर से आपको बोल रहे हैं कि चल बिरयानी खाते हैं, चल जाते हैं बिरयानी खाते हैं. आप बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा. तो वो बोल रहे हैं कि क्यों क्यों नहीं जाएगा तू, क्यों क्यों नहीं मना कर रहा है, तू तू तो बिरयानी पसंद करता है. तो तब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मैं बिरयानी खाने नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर से कल बिरयानी अटका. तो ये आपके साथ पहले भी हो चुका है, और कल कल फिर से हुआ था कि बिरयानी में जो चिकन का बोन था वो आपके गले में अटक गया था. तो इसलिए आप थोड़ा फ्राइटेंड हो बिरयानी खाने के लिए, और बोल रहे हो कि नहीं जाना है मुझे, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है क्योंकि फिर से कल बिरयानी अटका. तो फिर से के पहले आता है एफ. सो एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन. फिर कल में सीएल, सीएल से क्लोरीन. बिरयानी, बिरयानी में आपको याद रखना है कि दो एलिमेंट हो गए थे. तो बिरयानी में बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन, एंड लास्ट में जो आई है, सो आई स्टैंड्स फॉर आयोडीन. सो फिर से कल बिरयानी अटका. अटका में जो ए टी है, सो यू हैव टू रिमेंबर एस्ट्राटिन फ्रॉम दिस. और ऐसा भी याद रख सकते हो कि आपका एक दोस्त है फिलिप, बहुत शरारती दोस्त है, नॉटी दोस्त है. वो क्या करता है, उसको दारू पीने का बहुत शौक है. तो वो खुद अकेला नहीं पीता है, वो साथ में अपने दोस्तों को भी पिलाता है. तो अभी वो कॉलेज में आया है, कॉलेज के बाहर वो बियर लेके आया है. कौन सा बियर? ऑल्ट बियर. और उसके साथ साथ सिर्फ ऑल्ट बियर नहीं, वो आइस भी लाया है, ताकि आइस डाल के सभी मिलके, सभी दोस्त मिलके पी पाए. जब कॉलेज खत्म हो जाए शाम को, सभी दोस्त मिलके वो ऑल्ट बियर पी पाए. तो क्या हुआ, आपका फ्रेंड जिसका नाम है फिलिप, तो फिलिप कॉलेज के बाहर लाया आइस वाला ऑल्ट बियर. तो सभी दोस्तों मिलके खाने के लिए वो कॉलेज के बाहर लेके आ गया कि सब जब जैसे ही कॉलेज खत्म होगा सभी दोस्त मिलके बैठेंगे और ऑल्ट ऑल्ट बियर पियेंगे. तो क्या याद रखना है कि फिलिप कॉलेज के बाहर लाया आइस वाला ऑल्ट बियर. तो फिलिप से आएगा एफ, एफ फॉर फ्लोरीन. कॉलेज से आएगा सी एल, सी एल फॉर क्लोरीन. बाहर, बाहर में आएगा बी आर, बी आर फॉर ब्रोमीन. और आइस वाला, ऐसे ऑल्ट बियर नहीं लाया, आइस के साथ लाया, तो आइस वाला ऑल्ट बियर. तो आइस में आई, आई फॉर आयोडीन. और ऑल्ट बियर में आएगा आपका ए और टी, तो ए टी एस्टेटिन. तो फिलिप कॉलेज के बाहर लाया आइस वाला ऑल्ट बियर. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द इंग्लिश वर्जन ऑफ द mnemonics फॉर ग्रुप 17. P block elements group 17. The elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Now how to remember this? So you know Roger Federer, a very famous player. So Roger Federer, he used to like a beer. He had a pet beer. So now that beer died because of old age. So what he did, he told his team that he wants to clone that beer. And he cloned that same beer, and he
took it as a pet. So that's why his old bear died, but he has already cloned that bear and he's keeping as a pet. Where he is keeping, he cannot keep it at his home, so he is keeping it in Atlanta. So that's why Federer's cloned bear is in Atlanta, because he cannot keep it in home, right? Then the bear will eat all the homemates. So that's why Federer has cloned a bear and he is keeping it in Atlanta. So you have to remember Federer's cloned bear is in Atlanta. So from Federer's, F stands for fluorine. Cloned beer, so this cloned Cl, this represents chlorine. Beer, B and R, so this beer represents bromine. Is in, so both in is or in you have I, so the starting letter is I. So from the I you can remember iodine, and where it is in Atlanta. So Atlanta starts with At, that is for astatine. So Federer's cloned beer is in Atlanta. Or what you can think, that you are flying, you are going through airplane and you are traveling in the first class, and in the first class you have been served a very special beer, and you are going to Atlanta, and in Atlanta they have served you a special beer. So that's why you are saying that first class beer in Atlanta. So you have enjoyed that thing very much, and then you are talking to your friend, and then you are saying, oh, they gave first class beer in Atlanta. So in Atlanta you got a very nice beer. So first class beer in Atlanta. So from first you have to remember F stands for fluorine. Then in the class Cl, Cl stands for chlorine. Br, B and R, this Br stands for bromine. And in, I stands for iodine. Atlanta, At stands for astatine. The first class beer in Atlanta. Now we will come to P block element group 18. अभी ये ग्रुप 18 में क्या क्या एलिमेंट है? ग्रुप 18 को बोला जाता है इनर्ट गैसेस. यहाँ पे सारे इनर्ट गैसेस हैं. It starts with helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. तो ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है. तो कैसे याद रखना है? तो ये याद रखना है कि ये तीन जो एक्ट्रेस, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, हेमा मालिनी, नेहा शर्मा, करीना कपूर, तीनों एक से एक बड़े एक्टर हैं. तो इनको एक साथ एक पिक्चर के लिए साइन किया गया है, और तीनों का एक सीन है कि उन तीनों को एक साथ रेन डांस करना है. बारिश होगी तो बारिश में उनको डांस करना है अपने अपने हीरो के साथ. तो वो डांस बहुत फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, और उस पॉपुलर होने की, और वो फिल्म भी पॉपुलर होने की रीजन क्या था कि हेमा, नेहा और करीना जी की रेन डांस. तो वो फिल्म चलने की मेन रीजन थी कि इन तीनों ने जो रेन डांस किया था वो बहुत पसंद आया लोगों को, दर्शकों को बहुत पसंद आया. तो क्या याद रखना है कि हेमा, नेहा और करीना जी की रेन डांस के वजह से वो फिल्म पॉपुलर हुआ. अभी देखते हैं इसमें एलिमेंट्स. तो हेमा में आता है Ag फॉर हीलियम. नेहा में Ne फॉर नियॉन. और में आपको ऐसे रखना है कि AUR और, तो इसमें A एंड R आएगा, तो A एंड R से होगा आर्गन. करीना में आएगा K एंड R, सो KR से होगा क्रिप्टन. G को आपको याद रखना है XC, तो ये XC याद रखोगे तो इससे आएगा जेनॉन. और रेन, हेमा, नेहा और करीना जी की रेन डांस, तो रेन डांस में आएगा RN से रेडॉन. तो वो फिल्म चलने की मेन रीजन क्या थी? हेमा, नेहा और करीना जी की रेन डांस. तीनों ने साथ में एक रेन डांस किया था जो कि बहुत फेमस हुआ था. ओके, ऐसे याद रखना है. Now we will come to the mnemonics of group 18 for P block element. What are the elements? The elements are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these 6 elements we will cover by this mnemonic. Now how to remember this? So there was a friendly match. Cricket match between a girl team and a boy team. Now we all know that
So these all are either politician or rapper or singer or actress. So they cannot play much cricket, right? So there was a match between these women team and men's cricket team. Now cricket team तो अच्छे खेलेंगे, so that's why. So when they went for batting, so when these women team went for batting, so all of these got out in 0 run. So this is Hillary Clinton, Nicki Minaj, Ariana Grande, and Kristen Stewart. So all these got bowled at 0 run because the main bowlers were bowling very well. So all of them got out at 0 run. And you have to remember that Hillary, Nikki, Ariana, Christine all made 0 run. और इसीलिए because of this women team lost that friendly match and the main team won that friendly match. Why? What is the reason? Because Hillary, Nikki, Ariana, Christine all made 0 runs. So Hillary, from Hillary you will have He. He stands for helium. Then Nikki, from Nikki you have to remember Ne. Ne stands for neon. Ariana, Ar. So Ar stands for argon. Christine, Christine is Kr. Kr stands for krypton. So all made 0 run. So 0 you have to remember as Xe. Xero, not Zero. You have to remember that 0 means Xe. So Xe stands for xenon and run, Rn. So this Rn stands for radon. So Hillary, Nikki, Ariana, Kristen all made 0 run. That is the reason this women team lost that friendly cricket match against men team. Okay. Now next one is this 7p period, and these these elements are often neglected in all the mnemonics. So whenever we made the mnemonics, we considered up to 6p, and we have not considered the 7p. So you just take this 7p and make a mnemonic with that. तो 7p में क्या क्या है? नाइहोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसाइन, ऑर्गेनिसन. तो ये 6 एलिमेंट है 7p में. तो इसको कैसे याद रखना है? तो अभी ओमेगल बहुत फेमस है, आपने भी यूट्यूब में वीडियोस देखा ही होगा कि ओमेगल में लड़का लड़की बात करते हैं और बहुत फनी कंटेंट भी क्रिएट करते हैं वो. तो ओमेगल में क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइप के फनी कंटेंट्स बनाते हैं लड़के या फिर लड़कियां. तो उसमें क्या है, ओमेगल में एक तुलसी नाम की लड़की बहुत फेमस है. तो अभी तुलसी क्या करती है, वो रोज देती है, और अगर आप ले लेते हो उसका रोज, तो फिर वो बहुत गंदा सा प्रैंक करती है आपके साथ. तो वो तुलसी पहले आपको प्रपोज करने की कोशिश करेगी. तो प्रपोज करने की कोशिश में वो आपको रोज देगी. अगर आप बोलते हो कि हाँ आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसका रोज, तो फिर वो आपका मजाक उड़ाएगी. सो दैट्स वाई यू डोंट, मतलब आपको नहीं लेना चाहिए तुलसी का जो फ्लावर है, वो नहीं लेना चाहिए. तो इसलिए आपका फ्रेंड आपको वार्न कर रहा है कि नहीं, फ्लावर मत लेना तुलसी से ओमेगल पे. तो नहीं, फ्लावर मत लेना तुलसी से ओमेगल पे, क्योंकि फ्लावर लोगे तो उसके बाद वो बेइज्जती करेगी, और फिर बेइज्जती करके वो यूट्यूब में वीडियो छोड़ देगी, तो फिर आपका बेइज्जती हो जाएगा. तो दैट्स वाई आपका फ्रेंड आपको वार्न कर रहा है कि नहीं, फ्लावर मत लेना तुलसी से ओमेगल पे. तो नहीं में आ रहा है NH, NH फॉर नाइहोनियम और निहोनियम. फ्लावर में आ रहा है FL, FL से हो रहा है फ्लेरोवियम. मत में आपको याद रखना होगा MC, मत से होगा मॉस्कोवियम. लेना में आपको याद रखना है LV आएगा, लिवरमोरियम. तो इसको थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि मत में MC होगा क्योंकि M से स्टार्ट हो रहा है, लेना L से स्टार्ट हो रहा है तो ये लिवरमोरियम होगा. और तुलसी में TS है तो तुलसी होगा टेनेसाइन. तुलसी से ओमेगल पे, तो ओमेगल में है ONG, तो ONG से होगा ऑर्गेनिसन. तो नहीं, फ्लावर मत लेना तुलसी से ओमेगल पे, क्योंकि अगर आपने फ्लावर ले लिया तो फिर वो आपका बेइज्जती करेगी, फिर उसका वीडियो यूट्यूब में छोड़ देगी, तो आप पे लोग हंसेंगे, है ना. तो फ्लावर मत लेना तुलसी से ओमेगल पे. तो अभी जाओ जाके सर्च करके देखो तुलसी नाम का कोई है भी या नहीं जो ऐसे ओमेगल के ऊपर ओमेगल वीडियोस छोड़ दिया. आई डोंट नो, हो भी सकता है कोई. Okay, so if you want to remember these 7p elements along period, so these 7p elements, these are often neglected.
in the mnemonics, and mostly people don't include them in the mnemonics. That's why I have made this separate mnemonics for this 7p elements along period. So in the 7p we have nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, oganesson. So how to remember this? So you can remember that this Niho and Augie, they are actually friend. They are friend to each other. So this bird's name is Niho, which is a flamingo bird. So Niho and Augie, they are friend to each other, and they love teasing each other in a friendly manner. So that's why you have to remember that Niho, flamingo of Moscow. So this flamingo is coming from Moscow. So this one is from Moscow. So Niho, flamingo of Moscow, loves teasing Augie because they are friend to each other. That's why they, in a friendly manner, they tease each other. They like to do it. They love to do it. So you have to remember Niho, flamingo of Moscow, loves teasing Augie. So in this Niho, NH will come from this NH, or from the entire Niho. You can remember it will be Nihonium, Nihonium or Nihonium. And flamingo FL will come from this flamingo or FL. It represents Flerovium. And Moscow, in this Moscow you can see M and C are there, or if you even remember this Moscow, that Moscow will remember Moscovium, which this is MC stands for, Moscovium. Loves, in this loves, L and V, that stands for Livermorium. And teasing T and S, that stands for Tennessine. And Augie stands for Oganesson. So Niho, flamingo of Moscow, loves teasing Augie in a friendly manner. So that's how you can remember this 7p elements. So this much was for this video. So in this video, lecture for part A, we have covered mnemonics for S block elements and mnemonics for P block elements. So in the next part, so part B, lecture 4, we will cover the mnemonics for D block elements along group. And in the next part, lecture 4, part C, we will cover the mnemonics for D block elements along period and mnemonics for F block elements. So I am giving the mnemonics both in Hindi and English so that you can figure out which one seems easier to you, and you can follow that one, or else you can come up with your own mnemonics and comment down below that which mnemonic you found that it was very interesting, or if you have some different mnemonics, if you feel that that one is easier, and if you want to help other students as well, then comment down your other easier mnemonics as well. And if you have any problem or any clarification is required, that also you mention in the comment. So thank you all for joining, and I will be waiting for the comments. If you have any suggestion, or if you can give a better mnemonics, please comment down. Till then, take care. Bye bye.